Occasionally, people ask me this question that we always see plasmids when we are doing cloning, where they are found in natural environment. बैक्टीरिया में अगर नेचुरली प्लाज्मिड होते हैं तो वो कौन से होते हैं, हमें नजर तो नहीं आते. So let me tell you, there are plasmids inside the bacteria, and they can be divided into 5 categories: fertility plasmids, resistance plasmids, col plasmids, degradative plasmids, and virulence plasmids. Now, what are fertility plasmids? Uh, one of the main methods for a bacterial cell to divide is by conjugation. In conjugation, what happens? The two cells come together and a cytoplasmic bridge is formed between them, और एक plasmid होता है जो उसको transfer करता है. So that is particularly known as fertility plasmid. They contain TRA gene, basically transfer genes, and have no characteristic beyond the ability to promote conjugal transfer of plasmids. Transfer genes code for F. pylus and the DNA transfer process. So basically fertility plasmid का इससे ज़्यादा कोई role नहीं है कि they help in conjugation of the bacteria. So this is an F plasmid, and you can see in this image the green colored circle is F plasmid, and it helps forming the conjugation pili. Uske baad ultimately you can see that it is one strand of the plasmid DNA transferred to the recipient, or ultimately both cells become F plus. Previously one cell was F minus. Now, but I want to give you a scenario, and that scenario is अगर हम एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन लेते हैं और उसके अंदर हम जीन इंसर्ट करना चाहते हैं कि हम सिर्फ एक बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करें और जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसमें बाकी जीन्स भी चले जाएं. प्रीटी मच द वे वी हैव दिस ड्रीम ऑफ जीन थेरेपी कि आपका अगर कोई सेल खराब है तो हम उसके अंदर आपके अंदर एक जीन इंसर्ट कर दें, क्योंकि हम अब आपको डिसइंटेग्रेट तो नहीं कर सकते कि आपके बॉडी के तमाम सेल्स को अलग अलग उसमें जीन डाल दें. तो अल्टीमेटली वही जीन टेकअप कर लिए जाए, वही जीन टेकअप हो जाए बाय द होल बॉडी सेल्स. सो हाउ कैन वी बेसिकली डू इट? Imagine that if you have a gene which you want to transfer, and if it is on the F plasmid, या उसी बैक्टीरिया में आप F plasmid दे दें, तो बेसिकली यू विल बी एबल टू ट्रांसफर दैट. लेकिन इसकी रिपरकशन भी है. मोस्टली जो हम लोग जीन्स यूज करते हैं, जो वेक्टर्स यूज करते हैं, they are not from this particular category, and the reason is कि अगर एक रिसर्चर है वो काम कर रहा है और वो सर्टेनली इस तरह का वेक्टर इनहेल कर ले और ऐसा बग इनहेल कर ले, तो आपकी बॉडी का जितने माइक्रोब्स हैं they will be affected by it. So therefore we are very, very careful. Most of the molecular vectors are not F plasmids. So resistance plasmid, they are the most important ones because they carry genes conferring on the host bacterium resistance to one or more antibacterial agents such as chloramphenicol, ampicillin, or mercury. One of the most common example is RP4, which is a plasmid naturally present in Pseudomonas. Pseudomonas has this plasmid which has ampicillin resistance, which has tetracycline resistance, which has kanamycin resistance. आप लोगों की जो मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं, जिस तरह एम्पिसिलिन हो गई, आप लोगों ने बैक एम्पिसिलिन मार्केट में मिलती है प्रोग्लोब के नाम से, टेट्रासाइक्लिन हो गई, कैनामाइसिन हो गई, तो बेसिकली ये प्लाज्मिड उसके खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. तो बैक्टीरिया इस तरह का प्लाज्मिड बहुत एडवांटेजेस है किसी भी बैक्टीरिया के लिए, बिकॉज इट हेल्प्स द बैक्टीरिया टू सर्वाइव इन एन हैजर्डस एनवायरनमेंट. लेकिन आप लोगों के लिए ये क्यों बेनिफिट है? क्योंकि हम मोस्टली इसी प्लाज्मिड को यूज करते हुए सिलेक्शन करते हैं, and we are able to differentiate between the bacteria which have the transformed plasmids or not. Okay, and we'll see it in detail that how that selection is done. Col plasmids, they code for colicins, proteins that kill other bacteria. Very common example is E. coli. Basically ये जो plasmids हैं, they are producing certain proteins which kill other bacteria. Common example is bacteriocin. तो
Otherwise, actually, they are not very harmful, but they are producing small peptides which interfere with the growth of neighboring microbes جو ان کے نیوٹرینٹس کو بیسیکلی ایک لحاظ سے سیبوٹاج کر رہے ہوتے ہیں کہ انہی کے نیوٹرینٹس پہ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو پرانے حکیموں نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ کسی کا پیٹ خراب ہو جائے تو وہ کہتے ہیں دہی میں اسپغول ڈال کے کھا لو. وائے؟ کبھی سوچا؟ بیسیکلی دہی میں کافی سارے اچھے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو اگر آپ کھا لیں تو آپ کے لیے ہارمفل نہیں ہے. اسپغول کیوں کھائیں؟ کیونکہ وہ آپ کو فائبر پرووائڈ کر دیتا ہے. بلکہ آج کل نیسلے نے ایک نیا دہی نکالا ہے وچ از رچ ان فائبر. کیا فائدہ ہے آپ کو؟ کہ جیسے ہی آپ وہ کھاتے ہیں تو دیر از دس نیوٹرینٹ وار ان یور اسٹمک کہ وی ہیو لمیٹڈ اماؤنٹ آف نیوٹرینٹس اور ہم اسی کے اوپر زیادہ گرو کر جائیں. تو اس سے ایسے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ٹاکسک ہوتے ہیں وہ چانس ہوتا ہے کہ وہ وار لوز کریں کیونکہ آپ نے اتنا زیادہ ایک انوکیولم دے دیا ہے دہی کی صورت میں کہ اس کے اندر اور کافی سارے بیکٹیریا ہیں. اسی طریقے سے اگر سپوز کریں اس کے اندر کچھ ایسے بیکٹیریا ہوں جو بیکٹیریوسن پرووائڈ کر رہے ہوں تو دے کین کل دیٹ پرٹیکولر ٹاکسک بیکٹیریا دیر but it would not be as selective as we would like it to be. Then you have degradative plasmids. Degradative plasmids basically allow the host bacterium to metabolize unusual molecules such as toluene and salicylic acid. Mostly bacteria don't have the ability to degrade a lot of organic compounds. Lekin these sort of ability comes from harboring some of these unusual plasmids which are classified as degradative plasmids. One example is TOL of Pseudomonas putida. اسی طریقے سے کچھ virulence plasmids ہیں. They confer pathogenicity on the host bacterium. These include the TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens. So this particular bacteria is not toxic itself, lekin because it has this particular plasmid, therefore it is toxic. And it induces crown gall disease on dicotyledonous plants. TI plasmid is very big plasmid and it is a very important plasmid. When we will discuss plant biotechnology, then this would be discussed in quite a detail. This particular tree you can see has this tumor-like growth. اور یہ جو tumor-like growth ہے basically due to TI plasmid. تو it's basically it's not very advantageous for plants, لیکن جو ساری plant biotechnology ہے mostly we use these TI plasmids to confer nutrients on the plants.